Sorry guys, last my recording stop हो गया, but we are continuing the same video or same way, we are same lecture में we are going. So the business strategy involves continuous innovation, strategic partnerships, diversification into electronic vehicles and other mobility solutions. तो ये पूरा भावेश अग्रवाल की स्टोरी हो गई. फिर जोमेटो की बात करें तो जोमेटो फाउंडेड इन was Dipender Goyal and Pankaj Chadda is leading food delivery and restaurant discovery platform with a valuation exceeding 12 billion. Zomato's technology connects users with local restaurants and delivery services. तो वो वही हो गया. The business strategy involves expanding its global footprint, acquiring competitors and integrating additional services like grocery delivery. ये सब there's a whole sort of things that have been delivered. Now Zerodha की बात करें तो Zerodha is a one of a good company that I believe also founded by Nitin Kamath and Nikhil Kamath, founded Zerodha, a fintech company that has become India's largest retail stockbroker, valued at over 3 billion. Zerodha introduced a disruptive model by offering कमीशन फ्री इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स. तो पहले हर एक ट्रांजेक्शन पे चार्जेस लगते थे, बट उन्होंने कमीशन निकाल दिया एंड दे स्टार्टेड डूइंग दैट. So the business strategy involves leveraging technology to provide a user-friendly platform, focusing on financial education, continually introducing innovative features to enhance their trading experience. तो अगर financial education की बात करें तो 01 network है, it's a good network of media house. फिर अगर it said that system always wins. फिर सिस्टम आप कभी ब्रोकर कभी हार नहीं सकता, वैसी चीज है कि सिस्टम कभी हार नहीं सकती. वैसी चीज है कि जहां पे सिस्टम चलती है वो कभी हार ही नहीं सकती. बाई साइड से भी पैसे कमाते हैं, सेल साइड से भी पैसे कमाता है. कसिनोज इज लाइक अ सेम एग्जांपल कि कसिनो में आप जाते हो तो वो कसिनो कभी नहीं हार सकता. इंडिविजुअल प्लेयर्स और प्लेयर्स कैन विन और लूज. कसिनो नेवर लूजेस. दैट्स व्हाट आई बिलीव एंड दैट्स व्हाट द एंटायर थिंग इज कि ज़ेरोधा ने उसी उसी पैरामीटर पे इतनी बड़ी ब्रांड बना दी, इतना बड़ा कंपनी बना दिया, बिकॉज़ सिस्टम कैन नेवर लूज़. दैट्स व्हाट द एंटायर थिंग इज़. नाउ फिर ओयो की बात आई. सो ओयो, रितेश अग्रवाल फाउंडेड ओयो रूम्स, और हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप वैल्यूड एट ओवर 8 बिलियन. ओयो डिसरप्टेड द होटल इंडस्ट्री विद इट्स बजट अकोमोडेशन मॉडल. द बिजनेस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स पार्टनरिंग विद बजट होटल्स, ensuring क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी फॉर सीमलेस बुकिंग एक्सपीरियंसेस. तो यही हो गया. रितेश अग्रवाल इज अ गुड गुड फाउंडर. उन्होंने ओयो बनाया. फिर अभी दे आर प्रिज्म प्रिज्म करके ऐसा कुछ बना रहे हैं. प्रिज्म में दे आर टारगेटिंग द एंटायर ग्लोबल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. वहाँ पे जा रहे हैं. सो दैट्स अ गुड सॉर्ट ऑफ अपवर्ड लैडर दैट इज बीइंग चेज्ड बाय रितेश अग्रवाल. एंड फिर अपना स्विगी आ गया. स्विगी, नंदन रेड्डी, श्रेया, मजेटी, माहौल जमनी. ठीक है. स्विगी's technology connects users with local restaurants, offering quick and reliable food delivery services. The business strategy involves aggressive expansion, innovative entrepreneurship, and enhancing customer experiences. अब आप बोलोगे कि जोमेटो एंड स्विगी यहाँ से कैसे ग्रो होगा अब. सो अगर आप देखो तो बोथ आर चूजिंग अ डिफरेंट पार्ट. सो जोमेटो का मेजर रेवेन्यू आ रहा है ब्लिंकिट से, विच इज अ फास्ट डिलीवरी ऐप, एंड 10 मिनट्स का जो ब्लिंकिट का जो प्रॉमिस है, तो उनका मेजर रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है. एंड स्विगी का द मेजर रेवेन्यू, एंड दे आर शिफ्टिंग द स्ट्रेटजी टुवर्ड्स मोर ऑफ द रेस्टोरेंट ऑल्सो, रेस्टोरेंट एंड देयर ओन सॉर्ट ऑफ डीमार्ट स्टोर्स, डीमार्ट टाइप ऑफ स्टोर को जो होता है ना. सो दे आर मूविंग. तो अब ये दोनों स्ट्रेटजी बहुत अलग हो रही है, एंड दे आर चेजिंग द ग्रोथ डिफरेंटली. अब ये एक बहुत इनोवेटिव चीज हो रही है, बिकॉज नाउ द मार्केट विल बी सीइंग के ये जो 10 मिनट डिलीवरी ऐप वाला जो एक्सपेंशन है वो अच्छा है, या फिर ये जो ऑफलाइन वाला एक्सपेंशन है वो अच्छा है. एंड टाइम विल ओनली से अबाउट कि क्या अच्छी हो रही है. दैट्स व्हाट द आई गेस द स्ट्रेटजी पार्ट अबाउट दिस थिंग. नाउ फिर आ जाता है उड़ान. तो उड़ान फाउंडेड सुजीत कुमार, वैभव गुप्ता, अमोद मालविया फाउंडेड उड़ान, अ बी टू बी ई प्लेटफॉर्म वैल्यूड ओवर 7 बिलियन. उड़ान टेक्नोलॉजी कनेक्ट्स बिजनेस विद सप्लायर्स, स्ट्रीमलाइनिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस. ठीक है, जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ना उसको स्ट्रीमलाइन कर दिया. तो बिजनेस स्ट्रेटजी इंक्लूड्स डिजिटलाइजिंग ट्रेडिशनल सप्लाई चेन्स, फैसिलिटेटिंग इजी एक्सेस टू गुड्स एंड एनेबलिंग स्मॉल बिजनेसेस टू थ्राइव. तो उड़ान ने ये सब चीजें की. फिर अपना रेजर पे आ गया. तो रेजर पे आई लाइक, मतलब रेजर पे का यूआई यूएक्स बहुत बेहतरीन, मजा आती है. सो रेजर पे फाउंडेड इन 2014. Harshal Mathur and Shashank Kumar co-founded Razorpay, a fintech startup valued at over $3 billion. Razorpay provides payment solutions for businesses focusing on simplifying online transactions, and the business strategy involves technological innovation, expanding service offerings, and catering to the needs of a rapidly growing digital economy. तो ये वही चीज अपनी हो गई. तो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट Razorpay. Now, InMobi founded in 2007. Naveen Tiwari, Abhay Singhal, Amit Gupta, and Mohit Saxena founded InMobi, an advertising technology company valued at over $1 billion. InMobi's technology offers mobile advertising solutions, including personalized content and analytics. The business strategy involves global expansion, strategic acquisition, and staying at the forefront of the mobile advertising innovations. And
Now moving forward, being an entrepreneur कैसे बनना है या फिर क्या क्या चीजें चाहिए. Embarking on the entrepreneurial journey is a bold endeavor that demands a unique blend of passion, resilience, and strategic vision. Being an entrepreneur involves not just creating a business but navigating a landscape of challenges and opportunities. Successful entrepreneurs share common traits such as unwavering determination, adaptability, appetite for the risk taking. In India, several entrepreneurs have left an undeniable mark on the business landscape. One standout example is Mukesh Bhai Ambani, the chairman of Reliance Industries. His strategic decisions, especially the launch of Jio, revolutionized the telecommunication industry in India. वही है कि जियो जब लॉन्च हुआ तब it disrupted the entire industry. The resilience of entrepreneurs like Ambani is reflected in the fact that despite challenges, they continue to innovate and shape the industries. Now, globally, Elon Musk stands out as the beacon of entrepreneurship. Founders of companies like Tesla, SpaceX, Musk exemplifies a visionary approach pushing the boundaries of technology and the sustainability. Musk's journey underscores the need for audacious goals, innovative thinking, and the ability to pivot in the face of adversity. ठीक है, ज्ञान दिया है. The entrepreneurial landscape is marked by staggering numbers and compelling facts. According to the Global Entrepreneurship Monitor report, over 100 million businesses are launched annually, highlighting the global appetite for entrepreneurship. In India, the startup ecosystem has witnessed remarkable growth, highlighting the dynamic nature of its entrepreneurial landscape in the country. Now, the ease or difficulty of being an entrepreneur is subjective. Okay, वो तो subjective है, influenced by factors like market conditions, regulatory environments, and personal resilience. Starting a business demands a substantial effort, with statistics indicating that a significant percentage of startups face challenges and may not survive beyond the initial years. However, success stories like the Dhirubhai Ambani's Reliance or Jeff Bezos' Amazon highlight that with the right mix of vision, hard work, and adaptability, entrepreneurial endeavors can lead to transformative outcomes. The path to entrepreneurship is not without hurdles. Entrepreneurs often grapple with financial constraints, market uncertainties, and the constant need for the innovation. Despite these challenges, the allure of entrepreneurship lies in the potential to create impact and disrupt the industries positively. Being an entrepreneur is a multifaceted journey that demands a unique set of skills and qualities. The landscape is adorned with examples of individuals who have navigated challenges and emerged as transformative figures. Whether in India or globally, the numbers speak to the increasing prevalence of entrepreneurship. While the journey is marked by difficulties, the potential for innovation, growth, and positive impact continues to attract individuals to the exhilarating world of entrepreneurship. Now, skills of entrepreneur क्या क्या चाहिए होती है? So entrepreneurship requires a diverse skill set that goes beyond industry specific knowledge. Successful entrepreneurs often possess a combination of soft and hard skills to navigate the complexities of running a business. Broadly, here are top 7 skills essential for entrepreneurs. क्या है? पहले तो adaptability is an entrepreneur's capacity to navigate a constantly changing business environment. कुछ ना कुछ चेंज होना ही है, तो adapt कितना फास्ट कर रही हो. So successful entrepreneurs recognize that markets, consumer preferences, and technologies evolve, and the ability to adjust strategies accordingly is critical. Whether responding to industry trends, emerging technologies, or unforeseen challenge, as an adaptable entrepreneur remains agile, making informed decisions to stay relevant and competitive. फिर आ जाता है लीडरशिप. लीडरशिप तो चाहिए होती है. लीडरशिप इज एन indispensable skill for the entrepreneurs as they guide their teams towards shared goals. A visionary entrepreneur communicates a compelling mission, fosters a positive organizational culture, and inspires individuals to contribute their best. Effective leadership involves not only making strategic decisions but also cultivating a collaborative and motivated workforce essential for the sustained success. That's second कि leadership चाहिए होती है. फिर resilience कि resilience बहुत चाहिए होती है. The resilience is an entrepreneur's capacity to withstand setbacks, learn from failures, and persevere in the face of the adversity. The entrepreneurial journey is inherently fraught with challenges, and resilience allows individuals to bounce back, adjust the strategies, and maintain focus on the long-term objectives. Resilient entrepreneurs view setbacks as opportunities for growth, fostering a mindset that contributes a sustained success over a period of time. Now, फिर आ जाता है decision making. Decision making is a foundational skill for entrepreneurs who are constantly faced with choices that shape the trajectory of their businesses. Strong decision makers assess available information, weigh potential risks and benefits, and make informed choices aligned with the strategic vision. Effective decision making is essential for steering the business through the uncertainties, identifying the opportunities, and optimizing resources for the maximum benefit. तो decision making एक important skill हो जाती है. लास्ट में आ जाती है financial literacy. Financial literacy is crucial for entrepreneurs to understand and manage the financial aspects of their business. Entrepreneurs with financial acumen can create and analyze budgets, make strategic investment decisions, and ensure the overall financial health of their ventures. तो वही है financial literacy आ जाती है. This skill enables entrepreneurs to navigate cash flow challenges, plan for growth, and make data-driven decisions critical to the success of the entrepreneur. फिर आ जाती है networking events. Networking में क्या करना है? तो networking is a strategic skill that empowers entrepreneurs to build relationships beneficial for personal and professional growth. Effective networking involves cultivating connections with industry peers, potential clients, mentors, and other professionals. Entrepreneurs with strong networking skills can access valuable resources, stay informed about the industry trends, leverage collaborative opportunities, enhancing the overall resilience and versatility of their business.
फिर इनोवेटिवनेस आ जाती है. सो इनोवेटिवनेस इज एन एंटरप्रेन्योरल स्किल दैट इन्वॉल्व्स जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, embracing new technologies and finding unique solutions to the challenges. Innovative entrepreneurs drive differentiation, stay ahead of the competitors, and adapt to the evolving market demands. By fostering a culture of innovation, entrepreneurs can create a dynamic, responsive business environment, positioning their ventures for sustained success in an ever-changing marketplace. तो यही आ गया एडेप्टेबिलिटी, लीडरशिप, रेजिलियंस, डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी, नेटवर्किंग, इनोवेटिवनेस. तो ये 6-7 पॉइंट हो गए. देयर आर स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर. These skills collectively contribute to an entrepreneur's ability to not only start a business but also to sustain and grow it over the time. While specific industries may require additional expertise, the foundational skills mentioned above form the backbone of the entrepreneurial success. Continuous development and refinement of the skills are crucial for the entrepreneurs to thrive in the ever-evolving business landscape. Now, आ जाता है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग. तो क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ये गणेश जो थिंक स्कूल का फाउंडर है, ही प्रमोट द डिजाइन थिंकिंग वेरी मच. कि डिजाइन थिंकिंग कैसे डेवलप करनी है या फिर वो कैसे होनी चाहिए. Creative and design thinking represent powerful tools in an entrepreneurial arsenal, facilitating the generation of innovative solutions, fostering user-centric approaches, and driving business success. These methodologies prioritize empathy, ideation, iteration, and creating a dynamic problem-solving framework that is particularly beneficial for the startups and established business alike. Now, इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. तो पहला तो है यूजर सेंट्रिक इनोवेशन, कि भाई यूजर के लिए रेलेवेंट है कि नहीं. सो क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग प्रायोरिटाइज अंडरस्टैंडिंग द नीड्स, डिजायर्स एंड चैलेंजेस ऑफ द एंड यूजर्स. कि भाई एंड यूजर को क्या चाहिए, पहले उसके लिए बनाओ चीजें. by empathizing with the user experience, entrepreneurs can design products and services that truly resonate with the target audience. Target audience को resonate तो होना चाहिए. The user centric approach enhances the likelihood of products acceptance and loyalty, fostering a sustainable business growth. तो यूजर सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए. फिर सेकंड आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड आइडिएशन. सो एंटरप्रेन्योर्स ऑफन एनकाउंटर कॉम्प्लेक्स challenges that require innovative solutions. Creative thinking encourages the exploration of diverse ideas and perspectives, leading to a novel approaches of problem solving. I believe brainstorming is the best activity to हैव अ प्रॉब्लम सॉल्व. कि भाई बैठना पड़ेगा, प्रॉब्लम्स के साथ बैठना पड़ेगा, डीप डाइव करनी पड़ेगी, एक-एक चीज़ें फ्लो चार्ट्स में लानी पड़ेगी एंड माइंड मैप्स बनाने पड़ेंगे कि भाई ये करेंगे तो ये हो सकता है, ये करेंगे तो ये हो सकता है, ये नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है. दैट्स व्हाट द डिजाइन थिंकिंग इज ऑल अबाउट. Design thinking, with its emphasis on the iteration and prototyping, allows entrepreneurs to refine and optimize solutions based on user feedback, resulting in more effective and market-ready products. तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग तो करती ही रहनी पड़ेगी एंड आइडिएशन कि बैठना पड़ेगा किसी के साथ. फिर आ जाता है एनहांस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. In today's dynamic business landscape, standing out from the competition is paramount. Creative and design thinking enables entrepreneurs to develop unique value propositions, distinctive branding, and innovative products or services. This not only attracts customers but also positions the business as an industry leader, contributing to the long-term competitiveness. कि competitiveness को भी जज करने के लिए भी मजा आती है इन सब चीजों में कि भाई हमारा competitive advantage क्या है इन based on the design thinking approach. फिर आ जाता है adaptability and resilience. The iterative nature of creative and design thinking fosters adaptability. Entrepreneurs can quickly adjust to changing market conditions, incorporate feedback, and pivot the strategies based on the evolving user needs. Adaptability enhances the resilience of business, ensuring they remain relevant and responsive in the face of uncertainties. तो वही है कि adaptability and resilience तो चाहिए होगा ना यार, उसके बिना क्या कहाँ जाओगे. पेशेंस चाहिए, adaptability चाहिए, resilience चाहिए कि भाई हम धंधे में बने रहेंगे. फिर आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स. सो क्रिटिकल थिंकिंग इज एन एंटरप्रेन्योर स्किल दैट ऑब्जेक्टिवली एनालाइजेस द इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉज अ रैशनल कंक्लूजन. एक एनालाइज करती है पूरी इंफॉर्मेशन को एंड ड्रॉज अ रैशनल कंक्लूजन फ्रॉम द सेम. इट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स असेस अ सिचुएशन एंड कम अप विद अ लॉजिकल सॉल्यूशन. एक सिचुएशन को असेस करो एंड एक लॉजिकल सॉल्यूशन निकल रहा है कि नहीं, तो वही है अपना क्रिटिकल थिंकिंग. सो एम्प्लॉयर्स लुक फॉर कैंडिडेट्स विद क्रिटिकल थिंकिंग बिकॉज इट हेल्प्स सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड बिल्ड स्ट्रेटजीज फॉर द बिजनेस ग्रोथ. तो एम्प्लॉयर्स को भी वी थिंक कि हमें जॉब्स चाहिए, बट द थिंग इज़ उनको भी अच्छे कैंडिडेट्स चाहिए, समझो। सो इट्स नॉट कि भाई किसी को अच्छे कैंडिडेट्स नहीं चाहिए। बिज़नेसेस, कंपनीज़ वांट गुड कैंडिडेट्स टू जॉइन देम। सो इफ वी हैव दिस क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग. तो मेरा एक अब बहुत गंदी चीज़ हुई थी। मैंने फर्स्ट इंटरव्यू दिया था मेरी लाइफ़ का एंड मैंने ऐसा फुल फॉर्म में ऐसे सब चीज़ें बोल दी एंड द एम्प्लॉयर वाज़ लाइक, आई कैन हायर यू बट आई डोंट वांट टू हायर यू एट ऑल. क्योंकि तू बहुत छूल वाला बंदा है, तू कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ये हर हर रोज कुछ ना कुछ नई चीजें चाहिए होती है तुझे एंड आई कैन नॉट गिव यू.
एज एन एम्प्लॉयर आई कैन नॉट गिव यू, एंड वो टीम मेंबर्स को भी अच्छा नहीं लगेगा. आई कैन हायर यू बट आई डोंट वांट यू इन माय टीम. एंड दैट्स व्हाट आई वाज लाइक, यार अच्छे बंदे को भी नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, दैट्स व्हाट दिस ग्रोथ इज अबाउट, ऑल अबाउट. And that's how you approach your entire approach. And that's why usually a critical thinker is independent, competent, and reflective. This skill helps entrepreneurs logically connect ideas, scrutinize the information, evaluate the arguments, and find inconsistencies in work and solve complex. तो ये जो स्किल है ना, गांठ बांध लो. This skill helps entrepreneurs logically connect ideas, scrutinize the information, and evaluate arguments, find inconsistencies in work and solve complex. तो ये 5 चीज़ जो है ना फ्लो, अगर किसी फाउंडर को मिल गई ना आपके आपके एज़ एन एम्प्लॉयी, तो वो ही विल जस्ट गो मैड. ही विल बी लाइक, मुझे ये बंदा चाहिए, कुछ भी कर लो. Instead of memorizing information, such candidates use the information to deduce the meaningful insights. तो वही है कि वहाँ से insights लानी पड़ेगी, एंड कुछ कंक्लूजन, कुछ एनालिसिस निकालना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट क्रिटिकल थिंकिंग इज ऑल अबाउट. नाउ, challenges associated with the creative and design thinking in business. तो पहला तो आ जाता है रिसोर्स इंटेंसिवनेस. इम्प्लीमेंट क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग कैन बी रिसोर्स इंटेंसिव, कि भाई टाइम लगेगा उसमें, ऐसा नहीं हो सकता भाई एक दिन में कोई बन जाएगा. द नीड फॉर एक्सटेंसिव रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग एंड यूजर टेस्टिंग कैन स्ट्रेन लिमिटेड बजट्स एंड पीरियड्स, पर्टिकुलरली फॉर स्टार्टअप्स विद कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज. वो तो है ही यार, स्टार्टअप इसलिए तो बना रहा है कि उसके पास रिसोर्सेज कम पड़े, एंड उसी वजह से ही इज मेकिंग द स्टार्टअप. बट एंटरप्रेन्योर्स मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन इनोवेशन एंड रिसोर्स अलोकेशन टू एंश्योर सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिस. को एक अच्छा सा बैलेंस हो तो मजा आ जाए. दैट्स द रिसोर्स इंटेंसिवनेस. फिर आ जाता है रेजिस्टेंस टू चेंज. ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस में रेजिस्ट द कल्चरल शिफ्ट रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग. एम्प्लॉयज एंड स्टेक होल्डर्स accustomed to conventional methodologies में रेजिस्ट, एम्ब्रेसिंग अ मोर इटरेटिव एंड यूजर सेंट्रिक अप्रोच. तो वही हो जाता है कि भाई रेजिस्टेंस तो आना ही है भाई. ये चीजें ऐसे नहीं हो सकती भाई एक दिन में हो गई और एक दिन में खत्म कर दे. इसमें रेजिस्टेंस आना है, इसको इट्स अ इंटरनल अप्रोच. फिर ओवरकमिंग रेजिस्टेंस टू चेंज एंड फॉस्टरिंग अ कल्चर दैट वैल्यूज इनोवेशन कैन बी अ सिग्निफिकेंट चैलेंज फॉर द एंटरप्रेन्योर्स. फिर आ जाता है एम्बिग्यूटी इन द मेजरमेंट. मेजरिंग द सक्सेस ऑफ क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग इनिशिएटिव्स कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द सब्जेक्टिव नेचर ऑफ creativity. Quantifying the impact of innovative solutions on business outcomes may not always align with the traditional metrics. Entrepreneurs may face difficulty in presenting clear ROI, making it crucial to establish meaningful key performance indicators that align with the unique objectiveness of the creative इनिशिएटिव्स. तो दिस इज एम्बिग्यूटी इन मेजरमेंट, कि क्या मेजर, इसमें मेजरमेंट क्या करेगा भाई, किसी का दिमाग कैसा कितना तेज चल रहा है, वो मेजर कैसे होगा, वो नहीं हो सकता. दैट्स द थिंग. तो 3 चीज़ें आ गई प्रॉब्लम्स: रिसोर्स इंटेंसिवनेस, एम्बिग्यूटी इन मेजरमेंट, एंड रेजिस्टेंस टू चेंज. Creative and design thinking represents powerful frameworks for entrepreneurs seeking to innovate, solve complex problems, and differentiate their business. By prioritizing user-centric approaches and fostering a culture of continuous innovation, entrepreneurs can harness these methodologies to stay ahead in the competitive landscape. While challenges such as resource constraints, resistance to change, and ambiguous measurement exist, overcoming these obstacles is vital for entrepreneurs among aiming to build resilient, adaptive, and successful businesses. तो वो तो करना ही पड़ेगा. Now, entrepreneurial decision making. In fast-paced, dynamic landscape of the new age startups, effective decision making is paramount for the success. Effective decision making तो करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पता है कि डिसीजन मेकिंग तो करना ही पड़ेगा, और अच्छा डिसीजन मेकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, पता है. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डिसीजंस, ठीक है. The ever evolving market conditions, technology advancements, and changing consumer preferences require entrepreneurs to make agile and informed decisions to stay competitive. The speed at which startups operate demands quick yet well thought out choices to capitalize on the opportunities and mitigate the risk. Decision making is a compass guiding startups through uncertainties, helping them navigate challenges and seize the market niches. तो ये मेन चीज आ गई. डिसीजन मेकिंग क्या है? कंपास है, गाइडिंग स्टार्टअप्स through uncertainties, helping them navigate challenges and seize the market niches. The ability to make strategic decisions ensures resource optimization, critical for the startups often working with limited budgets and time constraints. Strategic decisions क्या करती है कि भाई रिसोर्स को ऑप्टिमाइज कैसे और अपने अच्छे से कर सके. In the startup ecosystem where innovation is a constant, decision making becomes a catalyst for bringing groundbreaking ideas to fruition, fostering adaptability and the resilience. तो यही है, the decision making process is in its broadest form has 5 major steps. अपने ये ऐसे में भी पढ़ते थे कि आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालिसिस, जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज, एंड लास्ट इज इम्प्लीमेंट एंड मॉनिटर. वही आ गया, आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज बिगिन विद recognizing a problem or identifying an opportunity. क्या है, क्या नहीं करना. This step involves a thorough analysis of the business environment, market trends, and customer needs. An example is the decision making process that led to the creation of Airbnb. The founders, Brian Chesky and Nathan Joe Gabbia, identified the problem: a lack of affordable and unique lodging options for travelers. This recognition paved
the way for a disruptive solution transforming spare rooms into lodging opportunities through an online platform. तो ये पूरी चीज it got developed over here. फिर आ जाता है gathering information analysis. Once a problem or opportunity is identified, entrepreneurs engage in gathering relevant information. This step involves market research, competitor analysis, and collecting data to inform the decision making process. An example is Netflix decision to shift from a डीवीडी रेंटल टू एन ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस। तो ये चीज़ वहाँ से आना शुरू हो गई कि नेटफ्लिक्स ने क्या किया कि भाई जो डीवीडी रेंटल मॉडल था उसको ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विस के मॉडल में दे शिफ्टेड आउट बिकॉज उनको इनसाइट्स मिलना शुरू हो गई। सो बाय एनालिसिंग द चेंजिंग प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स, नेटफ्लिक्स एडप्टेड इट्स स्ट्रेटजी टू अलाइन विद द ग्रोइंग डिमांड फॉर ऑन डिमांड स्ट्रीमिंग, रिवॉल्यूशनाइजिंग द एंटायर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ये चीज़ हो गई गैदरिंग इन्फॉर्मेशन एनालिसिस। फिर आता है जनरेटिंग ऑल्टरनेटिव्स। सो एंटरप्रेन्योर्स एक्सप्लोर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स और सॉल्यूशंस टू एड्रेस द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी। दिस स्टेप एनकरेजेस क्रिएटिव थिंकिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो वही है ऑल्टरनेटिव्स फाइंड करने में बहुत दिमाग लगता है, वो बैठना पड़ता है कि भाई क्या करें क्या नहीं कर सकते। फॉर इंस्टेंस व्हेन फेस विद द चैलेंज ऑफ रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, एलोन मस्क डिसीजन प्रोसेस लेड टू द क्रिएशन ऑफ द स्पेसएक्स। बाय एक्सप्लोरिंग ऑल्टरनेटिव्स इन स्पेस ट्रैवल, Musk aimed to make space exploration more cost effective, eventually contributing to the development of reusable rocket technology। तो वही हो गया कि reusable rocket technology आ गई। फिर आ जाता है evaluating and selecting the best option। Entrepreneurs assess each alternative based on criteria such as feasibility, cost, and potential impact. The evaluation process involves weighing the pros and cons to identify the most viable option। कि most viable option क्या है? So a notable example is Steve Jobs' decision to introduce the iPod, revolutionizing the music industry। तो best option कौन सा था म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए? आईपॉड। सो जॉब्स इवेल्युएटेड वेरियस alternatives, choosing a portable digital music player with an intuitive user interface, ultimately transforming Apple into a leader in the consumer electronics market। ये चीज हो गई अपना evaluating and selecting the best option। फिर आ जाता है implementing and monitoring। Once the decision is made, entrepreneurs move forward with the implementation phase। This involves putting the chosen solution into action and monitoring its performance। Mark Zuckerberg's decision to acquire Instagram in a case is a point कि वही है कि मार्क ज़करबर्ग को लगा हुआ है इंस्टाग्राम बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, तो उसको अपने अक्वायर कर देते हैं। रिकॉग्नाइजिंग द ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ फोटो शेयरिंग, ज़करबर्ग implemented the acquisition, successfully integrating Instagram into the Facebook ecosystem and capitalizing on the platform's पॉपुलैरिटी। तो वही चीज़ हो गई कि हाँ, उन्होंने क्यों एक्वायर किया वो चीज़। तो ये यहाँ से आ गई। फिर द इंटरकनेक्टेड ग्लोबल बिज़नेसेस एनवायरनमेंट amplifies the consequences of decisions, making each one critical for the startup growth trajectory. Whether it's choosing the right market entry strategy, technology stack or business model, effective decision making sets the foundation for the sustained success, enabling startups to not only survive but thrive in the competitive and rapidly changing business landscape। सो दिस इज व्हाट कि भाई उनको तो करना ही पड़ेगा। फिर आ जाता है सक्सेशन प्लानिंग एंड मैनेजिंग द फैमिली बिजनेस। सक्सेशन प्लानिंग अमंग द इंडियन एंड ग्लोबल एफ्लुएंट इज a strategic process aimed at ensuring the smooth transition of wealth, leadership, and business continuity across the generations। Each family's approach varies, सबकी कुछ ना कुछ वेरी होगी। द ओवरआर्चिंग गोल इज टू प्रिजर्व एंड ग्रो देयर लेगेसी के भाई लेगेसी ग्रो नहीं चाहिए। इन इंडिया मेनी वेल्दी फैमिलीज प्रायोरिटाइज सक्सेशन प्लानिंग ड्यू टू कल्चरल एम्फोसिस, फैमिली वेल्थ एंड द कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। द अंबानी फैमिली लेड बाय मुकेश अंबानी इज अ prominent example। The successful transfer of Reliance Industries from the founder Dhirubhai Ambani to his sons Mukesh and Anil displays a well executed succession planning। कोई ऐसा वेल एग्जीक्यूटेड नहीं था उसमें भी बहुत ऐसी घमासान युद्ध हुआ था, बहुत बहुत ऐसी फालतू की चीजें हुई थी उसमें भी, उस सक्सेशन प्लानिंग में भी। But Mukesh Ambani has continued the business expansion, diversification, and global influence, emphasizing the importance of the strategic planning. Similarly, the Bajaj family, founders of the Bajaj Group, has implemented a robust succession planning. Rahul Bajaj, the patriarch, passed on the leadership reins to his son Rajiv Bajaj, who successfully steered Bajaj Auto towards the global prominence in the automotive industry. On the global stage, succession planning is equally crucial for the high net worth families. The Walton family, heirs of the Walmart fortune, exemplifies effective succession planning। The family has successfully transitioned leadership from across generations, preserving the Walmart legacy। तो मैंने ये जो वॉल्टन फैमिली की बात की ना, मेरा पहला वही था कि सैम वॉलमार्ट को हाउ ही ग्रू अप एंड हाउ ही डिड द थिंग्स। तो मैं वही पढ़ रहा था पहले 11th स्टैंडर्ड में जो मैंने बोला था। The recent appointment of Doug McMillan as Walmart CEO underscores the family's commitment to professional leadership while maintaining the family involvement। तो ये वही चीज होगा। इन यूरोप रॉथस्चाइल्ड पता है ना सबको? अगर नहीं पता, just गूगल एंड रीड अबाउट देम।
They are one of the most interesting, conspiracies of the world. Renowned for the banking dynasty, has navigated succession adeptly. With a history dating back centuries, the family established clear governance structures and mentorship programs, ensuring a smooth transition from one generation to the another. Succession planning is not without the challenges. Ensuring a balance between family values, professional leadership, and individual aspirations can be very complex. It requires open communication, financial acumen, and a shared vision among the family members. Many affluent families engage external advisors and set up family offices to streamline the process and provide the professional guidance. By proactively identifying and developing capable successors, entrepreneurs mitigate the risk of disruptions due to the unexpected events. It facilitates the preservation of the entrepreneurial vision, values, and legacy, enabling the business to adapt to new challenges and opportunities. Additionally, succession planning provides a strategic framework for talent development, aligning the next जनरेशन with the company's goals. तो वही है कि भाई एक टैलेंट पूल लाइन भी आना शुरू हो जाए एंड कैसे ग्रो हो सकते हैं. Ultimately, it safeguards the entrepreneur's hard work, investments, and the long-term success of the enterprise. Some strategies that ensure a smooth succession of business are discussed under. पहला तो आ जाता है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन एंड फैमिली गवर्नेंस. सो एस्टेब्लिशिंग ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स एंड रोबस्ट फैमिली गवर्नेंस स्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल सक्सेशन प्लानिंग. तो आई मेट अ पर्सन कॉल्ड एज रवि रवि मांदोडिया, ऐसा कुछ नाम था, सी ए रवि मांदोडिया. He does his entire practice on this succession planning only. His entire practice, CA practice is on succession planning. He guides, he advocate, advises family businesses to have a proper succession planning. And he have gained a massive following. उनकी expensive book भी publish होती है. A nice person to have a talk with. So that's a entire practice area which can be developed for you in the future. So this involves openly discussing family values, goals, expectations, as well as articulating the vision for the future. Creating a family constitution or charter that outlines roles, responsibilities, and decision making processes helps in mitigating conflicts and fostering a shared understanding among family members. Regular family meetings facilitated by external advisors if needed can strengthen communication and ensure everyone is aligned with the succession planning. तो ये पूरी चीजें हो जाती है ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन अगर रखा तो. फिर आ जाता है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ लीडरशिप. तो एंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन एंड मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द बिजनेस. एडॉप्टिंग अ प्रोफेशनल अप्रोच टू लीडरशिप इज क्रूशियल. कि भाई प्रोफेशनल अप्रोच रखना पड़ेगा. दिस में इन्वॉल्व हायरिंग एक्सटर्नल एग्जीक्यूटिव्स और डेवलपिंग फैमिली मेंबर्स थ्रू फॉर्मल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग programs. The goal is to combine the family's values and legacy with professional management practices. By embracing professionalization, succession planning becomes less about family dynamics and more about ensuring the business continued success and adapting to the evolving market condition. This strategy also facilitates the identification and development of competent successors from within the family और externally कि professionalization करना है कि नहीं करना, वो भी एक choice आ जाती है. फिर आ जाता है मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के भाई पूरा एक प्रोग्राम करवाओ. सो इम्प्लीमेंटिंग मेंटरशिप एंड सक्सेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इज इंस्ट्रूमेंटल इन प्रिपेयरिंग द नेक्स्ट जनरेशन फॉर द लीडरशिप रोल्स. सीनियर फैमिली मेंबर्स और एक्सटर्नल मेंटर्स कैन गाइड सक्सेसर्स by sharing experiences, imparting industry knowledge, and providing leadership insights. These programs may include formal training, exposure to different facets of the business, and opportunities for the skill development. By fostering a culture of continuous learning and mentorship, the family ensures that potential leaders are well equipped to take on the increasing business leaderships. This strategy not only develops the capabilities of successors but also builds a strong support network, facilitating a smoother transition when the time comes. तो यही चीज आ जाती है. Now, examples of poor succession planning. तो पहला तो है succession planning is tricky as it involves navigating complex family dynamics, balancing individual aspirations, and ensuring a seamless transfer of leadership, making it a delicate and intricate process for entrepreneurs and family-owned businesses. The challenge lies in aligning personal interests with the long-term goals of the business, often requiring meticulous communication, strategic foresight, and the delicate handling of relationships to achieve a successful transition. तो ये बहुत tricky हो सकता है. तो इसमें घोटाला किसने किया था? DLF लिमिटेड ने. So, a prominent real estate company in India faced succession planning challenges that impacted its stability. KP Singh stepped down as a chairman in 2015, leaving a leadership vacuum कि उन्होंने ट्रेन ही नहीं किया. A subsequent handover to his son Rajiv Singh was not without controversy. The lack of a well-communicated and transparent succession plan led to uncertainties and internal strife affecting the company's strategic direction and share prices. The episode highlighted the significance of clear and inclusive succession planning to maintain organizational stability and the investor confidence. फिर आ जाता है मुरुगप्पा ग्रुप. A diversified conglomerate experienced difficulties in its succession planning, particularly in the dispute over leadership within the family. कि वही खुद की family में कुछ ना कुछ dispute होना शुरू हो गया. So, the lack of a clear succession roadmap led to the internal conflicts, resulting in a legal battle over the control. The family feud brought unwanted attention to the business, impacting its reputation and potentially hindering its growth. Case emphasizes the importance of structured succession planning to avoid disruptions
ensure the smooth transition for the family owned business, preserving both legacy एंड द वैल्यू। तो वही हो गया मुरुगप्पा ग्रुप में, डीएलएफ लिमिटेड में यही चीजें आना शुरू हो गई। फिर आ जाता है रेड्डी फैमिली, फाउंडर्स ऑफ अपोलो हॉस्पिटल्स, फेस challenges in succession planning exemplified by leadership struggle among the family members. The absence of a transparent and agreed upon succession plan resulted in internal conflicts and disagreements over the control. This lack of clarity contributed to the disruption in the smooth transition of leadership, affecting the strategic direction and stability of one of the India's leading healthcare organizations. These examples underscore the importance of meticulous succession planning to avoid disputes and ensure the continued success of the family-owned enterprises. And with this, we finish the part one of the chapter one. Part B, I guess we will be starting in a new lecture, and we will be finishing off the MCQs also with it. And yeah, that's it. That's me. See you, Pratham Agaiwala, signing off. Thank you.